आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये है कि व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग और डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन द क्लास। तो क्वेश्चनिंग क्या है, जो बच्चा प्रश्न उत्तर का करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस करते हैं बीच बीच में पढ़ाते वक्त, वो क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है क्लासरूम में। या फिर इसको और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि डिफाइन क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेन इस टाइप इन डिटेल। अगला है, और इसी क्वेश्चंस को और एक तरीके से कहा जाता है डिस्कस द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनिंग। तो जो हेडिंग है वो है रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कस इट्स इन द क्लासरूम, और इसका क्लासरूम में क्या महत्व है उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो मीनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मीनिंग क्या है? इट इज़ ए मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। इट involve employing a series of questions to explore an issues and ideas and something intriguing. Questioning is the process of forming and wording that serves to develop answering and insights. The terms may have the following specified meaning. एक नंबर है इंट्रोगेशन, दूसरा नंबर है एक्सेप्टिसिजन, ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउट और ए चैलेंजिंग ए प्रीवियस हेल्ड बिहेव। तीसरा नंबर है क्वेश्चनिंग प्ले ए सेंट्रल रोल ऑफ नैरेटिव थेरेपी, यानी कि बच्चे में कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं, उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, इससे भी पता चलता है। उससे इन जो क्वेश्चनिंग बच्चा करते हैं उससे ये भी पता चलता है कि उसमें कौन कौन से भावनाएं उत्पन्न हो रही है। इस जो मैं बता रहा हूँ जिस टॉपिक पे, वो अपने मेंटलिटी पर किस हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इस चीज़ को भी आप आकलन कर पाइएगा। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। इन क्वेश्चनिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? ए लर्नर इज़ बाय नेचर ए क्वेश्चनर। जो लर्नर होता है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो क्वेश्चनर ही होता है। इफ़ देयर इज ए ड्राइव इन ए इंडिविजुअल्स टू इंक्रीज नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ ड्राइवन बाय डाउट, क्यूरियोसिटी, अंडरमेंट, incomprehension, puzzlement, uncertainty, recognition of a needs or curiosity. This drive is then focused through questions that the learners formulate and activity seeks to find answer to. They may be simple questions that seeks clear facts, or complex questionings that probes deep into concept, beliefs, and understanding. The question may provide an answers that solve the learning needs, or may lead the future questioning as knowledge and understanding grows. It is obvious through that, however, simple and complex and issues a good, clear, relevant questioning will be offer greater use to learner than a question that is vague, poorly defined and irrelevant. According to the Niels Postman Council, all of our knowledge result from questioning, which is another way of saying that questioning is our most important intellectual tools. Thinking is central to all learnings, and there is no learning without thinking. What centers to thinking is questioning. It is our questioning and fuels and drives our thinking. If schools holds a visions or goals that goes beyond the delivery of curriculum's contents, or if schools wants to equip pupils with the skills of learning, then it becomes obvious that a primary school for any independent learners is the ability to ask clear, well defined or relevant questioning. अगला टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के क्या क्या टाइप्स है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग के बहुत सारे टाइप्स है। फ्यू बेस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ महत्वपूर्ण एक लिस्टेड है। एक नंबर है ओपन, दूसरा नंबर है क्लोज, तीसरा नंबर है फनल, चौथा नंबर है प्रूविंग, पांचवा नंबर है लीडिंग, छठा नंबर है रिलेटरिकल क्वेश्चनिंग। सो One should know all the different type of questioning, science to use which types of questions and how to combine the different techniques to arrive at the best decisions or results. एक नंबर है open questions.
Open questions ask for elaborate explanatory answer, and they begin with what, why and how, describes, explains where, which, when, etc. It can be questions asking someone to explain what happens at a situation, a place, asking so why it's happening, asking for details of an incident, history of some happenings, explanations about their circumstance, explanations of needs about something, ideas and feedbacks. Open questions helps with two ways conversations and builds up an interest in the conversation. Some examples are one number what happened at the conference today, आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें क्या हुआ. दूसरा नंबर कुड यू प्लीज़ डिस्क्राइब्स योर नीड्स एंड कल्चर करंट circumstance. तीसरा नंबर व्हाट डू यू थिंक्स अबाउट दिस कंक्लूजन डिस्कशन. चौथा नंबर हु वर प्रेजेंट एट दिस इंसिडेंट. पांचवा नंबर हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन. इस कंक्लूजन आप कैसे पहुँचे. दूसरा नंबर क्लोज क्वेश्चन. क्लोज क्वेश्चन क्या. क्लोज क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर्स लाइक येस और नो एंड आंसर विद द वर्ड और टू, यानी कि एक शब्द या दो शब्द में जो आंसरिंग किया जाता है उस तरह के क्वेश्चन को क्लोज क्वेश्चन कहते हैं. दे आर यूजली आस्क्ड टू टेस्ट इफ someone has understood certain policies, procedures, rules, regulation, explanation, discussions, lectures, etc. Closed questions are also asked for how they feel to be specify or affirmation, etc. It is best not to ask closed questions when a conversation is going on smoothly, as it can bringing an end to a conversation and you might get into a risk of losing requirement information. Some of the words used in closed questions are do, did, would, should, etc. Some examples of closed questions are will I get a response by tomorrow, do we agree on this decision, are you happy with the service that we provide, which is your hometown, what do you do for a living. Funnel question क्या. Just imagine the shape of the funnels which use these types of questions. Funnel means यानी कि जिससे आप तेल उल डालते हैं गिलन में, उसको बोलते हैं funnel. ए funnel है जो वाइट माउथ, जिसका मुंह चौड़ा होता है एंड ग्रेजुअली नैरो, और जिसका निचला हिस्सा पतला होता है एट द बॉटम साधारणतः. सिमिलरली वी स्टार्ट विथ ए लॉट्स ऑफ जनरल क्वेश्चंस ऑन ए सिचुएशन एंड or incident and then narrow it down to one point to arrive at a conclusion. This type of questioning technique is used by investigators, researchers and detectives. In cases where investigators are involved, this type of questions can be used to gather information and then to narrow down to the arrivals at a decision. You can use lots of closed questions at the start and then widens onto asking open questions, thereby making the people to feel comfortable. अगला चौथा नंबर probing questions and trigger questions. Probing questions are used to gather more details and information. They are asking to clarify doubt and misunderstandings. These questions will help you pull out information from people who are hiding information or avoiding from tells you something. Some examples are यानी कि इसमें अच्छे से क्लियरिफाई किया जाता है कि जो जिस टॉपिक की आप बात करते हैं उसको अच्छे से समझाया जाता है, उस पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसको प्रोविंग क्वेश्चन बोलते हैं. ट्रिगर ये अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ. एक नंबर पे व्हाट एग्जैक्टली इज़ द करंट सिचुएशन. जो वर्तमान परिस्थिति है उसका क्या एग्जैक्ट परिस्थिति है. व्हाट डू यू नीड्स दिस डेटा बाय. किस डेटा बाय के क्या. व्हाट एग्जैक्टली will you be using this. What types of products do you need. How and where will you be using. Can you be more specified. Leading question and reflective questions. लीडिंग क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या किसको कहते हैं. लीडिंग क्वेश्चंस आर यूज टू लीड द पर्सन को जो लीड करता है होम यू आर टेकिंग टू. अगला आता है आपका
This leads the speakers to give an answer while they know that you are given them a choice. One has a careful job than manipulating while using leading questions. Some examples are कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उनको आप पढ़ लीजिएगा. फिर रिलेटिकल क्वेश्चंस क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस क्या होता है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सब है. अगला है क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग. जो टीचिंग क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है. दिस मेथड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट थ्रू क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इज मेड टू ascertain and evaluate the knowledge of students in regards to the subject. This method can be asked in yes or no. The students should be asking such questions which condense things the matters over. If the students cannot answer the questions fully, partial answers should be accepted, and another students may be asked to improve it. The teacher himself should be a regular habits of reading latest texts, as should also be asked to find answering in the authoritative texts. In this method of technique, control the situation, general information learned developed by the means of question and answer method. Advantage क्या कहता है क्वेश्चन आंसर मेथड, और उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड का, इनको आप देखना है. मेंशन ऑफ डिस्कशन का मेंशन मीनिंग क्या होता है उसको आप देख सकते हैं. उसका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास डिस्कशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप देखना है. क्लास डिस्कशन ऑफर स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर आइडियाज़. उनके आइडिया विचार को अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है जांच करने का. ऑप्शन अगेंस्ट द आइडियाज़ ओपिनियंस ऑफ देयर peers. It is important to set the right tones for discussions in the classroom earlier on in the semester and stabilize reports with your students. Study have shows that students who contribute to class conversation earlier in the semester are much more likely to continue contributions to class discussion throughout the semester than those students who remain quiet during the initial few weeks in the term. Therefore, it is imperative to find a way to involve all students in the formation discussions of the courses. Good discussion is like art. It may be hard to define it, but you know it when you see it. Things back to a good discussions you once had earlier as a students or a instructor. It is a healthy or good discussion. Students feel the comfort. Thank you.